ये शोर आप सुन सकते हैं, ये सैलाब के बेलगाम पानी का शोर है। मानसून की बारिशें और पहाड़ों से पिघलने वाली बर्फ का पानी इतनी खौफनाक शक्ल इख्तियार कर जाएगा, इसका किसी को अंदाजा नहीं। खासकर पेशावर के इलाके दाऊदजई के इस शख्स को। तभी तो सैलाब की इन बेरहम मौजों ने इसे संभलने का मौका न दिया और वो जिंदगी और मौत के बीचों बीच गिर गया। इस शख्स के दाएं भी मौत और बाएं भी मौत, दरमियान में सिर्फ इस खारदार तार का सहारा, या फिर इन दो लोगों का जिन्होंने उसे आगे और पीछे से दबोचे रखा। जिंदगी की कोई उम्मीद नहीं, सिर्फ हौसला और हिम्मत, लेकिन वो भी कब तक। धीरे धीरे रस्सियां और जिस्मानी तौर पर मजबूत लोग किनारे रखते गए, लेकिन ये बाबा क्या करे। इसके चेहरे और हाथों से इसकी उम्र और कुव्वत का पता चलता है। क्या वो बच पाएगा? वो उसे सहारा देने वाला दूसरा शख्स पानी में रह जाता है। बाबे को तो देखा जा सकता है, लेकिन दूसरा नजर नहीं आता। लेकिन इसके इरादे साफ दिखाई दे रहे हैं। इसका सर पानी में डूबा है, लेकिन वो मौत के आगे सर झुकाने को तैयार नहीं। इसने एक हाथ से बाबे को पकड़ रखा है और बाकी से पानी। मौत की आगोश में मौजूद बाबा किनारे पर खड़े लोगों को देख रहा है, जैसे बता रहा हो कि अभी उसने हिम्मत नहीं हारी। ही तवज्जो जा तलबगार माण्हू बोड़ जे बेरहम वहकरन जे घेरे हेठा है। हू बियो कुछ भी न पर फकत पंहिंजा सिर सलामत चाहिए था। Across the Punjab plains, the floodwaters are flowing south, leaving destruction on a massive scale. Villages washed away, towns underwater, their inhabitants waist-deep in misery. Hundreds of thousands of them left homeless and stranded. Until the waters recede, their dead can't be buried. And we have seen dead bodies coming from that area. People are dying. Cattle are floating away. So it's a very critical position. Thousands of villages like this one all across central Pakistan are now completely cut off after the worst flooding in living memory. Gilgit-Baltistan, cut off by frequent landslides. The weather here can change without adequate warning. Al Jazeera flies over some of the world's highest mountains into this narrow valley, where everyone is holding their breath as the level of the lake is constantly rising, and experts say it may soon overflow the embankments. Thousands of people are cut off in Upper Hunza by the new lake and reachable only by helicopters or boats. Others have been moved downstream, away from the threat of a sudden flood. Such settlements are now common, and work is going on at full pace to make way for others. A river that has sustained them for hundreds of years is now threatening to uproot everything in its path. The priority is to stay away from the river, and entire bridges have been dismantled to save them from what many are warning may be a 60-meter wall of water. It has cut off people on the other side who have made their own improvised bridges, often risking life and limb. हमारे जो खवातीन जो है उस साइड पे होते हैं और It's very difficult to cross the bridge and impossible.
ही तवज्जो जा तलबगार माण्हू ॿोड़ जे बेरहम वहकरनि जे घेरे हेठि आहिनि। हू ॿियो कुझु बि न पर फ़क़ति पंहिंजा सिर सलामत चाहिनि था। This is the main street of Atara Hazari. Before the water came, it was a thriving market town of 30,000 people. 4 days ago, it was engulfed. At the height of the flood, it was under 15 feet of water. Almost every building disappeared. Now, as the waters recede, the people are beginning to return. And, as we discovered today, there are some who never left. The local doctor, who now makes good use of a giant cooking pan. And these men, off to a nearby village to seek relatives they haven't seen since the waters came, to see also if they've survived. The people here are determined not to be beaten by nature. Pakistani military helicopters evacuate thousands of people stranded in the country's northwest by flooding. Recent monsoon rains have triggered these floods, now the worst in the region since 1929. The rainfall itself here is the heaviest in 35 years. Pakistan media have pegged the death toll at over 300, while authorities say over 20 villages have become submerged by floodwaters. With many roads cut off, our rescues... क्लोज कर दिए उनको कहें ठीक है। अब भाई अगर आप लोग लाइव दिखा दे 40 है ना यार, लोग है ना यार, कैमरा इधर कर दो ना थोड़ा सा। जी 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 यार गालिब सो यार गरीब में होना चाकम वाटो को यार बस वो बरेकानी दो जगह पर